Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 31st January, that is Wednesday, and we are here with the Hindu analysis of 31st January. Am I audible? Awaaz aa rahi hai? And a very good morning. Okay, so let's start with the first article. Missing Chief Minister Soren shows up in Ranchi. This we will be discussing it. Then there is an article talking about Imran Khan sentenced to 10 years in prison ahead of Pakistan's polls. So these two we will be discussing about it. So सबसे पहले ये वाला discuss करते हैं. We had seen it yesterday. ये वाली article आई थी. Soren untraced as ED team visits house over land fraud case. So I hope you are aware. So this is the Chief Minister of Jharkhand. He is the current Chief Minister of Jharkhand. His name is Mr. Hemant Soren, and he belongs to JMM, Jharkhand Mukti Morcha. Okay, and you should be knowing about it. तो हुआ ये था कि recently ED was actually doing some investigation and it reached the house of the Chief Minister and he was not found there. So it tries to untrace, मतलब मिले नहीं वो. ठीक है. So the Chief Minister, the ED team visited his office, house. Then the email was sent. They tried to contact through phone and all different things. So there is an allegation of money laundering in an alleged land scam case. So this was he was not found yesterday. This was in the news, but today this actually shows up in Ranchi. यानी मिल गए. ठीक है. I mean in the sense कि it was the media people saw him in the capital of Jharkhand, that is Ranchi. So that was seen and all. Okay. So इसमें क्या हुआ? Let's talk about that. So house after the BJP accused Jharkhand CM of going missing in Delhi since ED officials visited his residence. He resurfaced in Ranchi and several rounds of meetings with leaders from his ruling coalition on Tuesday. So he met his MLAs, his leaders, political party leaders, and the coalition party. So he's having coalition with Indian National Congress, RJD, and NCP, right? What we call it as Mahagathbandhan. Okay, or in English called it as Grand Alliance. So there is a Grand Alliance in Jharkhand. So which is led by Mr. Hemant Soren from GMM party, and there are other parties like Congress, RJD, and NCP are there as well. So he met in Ranchi with his leaders and the coalition leaders. Coalition मतलब वही coalition partner leaders. The MLAs of JMM, his political party, had led coalition express solidarity with the Soren. Solidarity भी मतलब एक तरह का support है ना, moral support. So the moral support was given by the MLAs of JMM that they are supporting the Soren government and all. They also signed a letter of support without any name, as speculation is rife that the chief minister's wife will be given the reins of the government. Reins मतलब क्या होता है? एक तरह से power यहाँ पर sense में. मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि there are some reports that he might get arrested. So if the chief minister gets arrested, then there are reports that his wife would be given the charge. ऐसी न्यूज आ रही है. ओके, बट लेट्स वेट फॉर दैट विदाउट लेट्स वेट व्हाट विल हैपन. तो ऐसा कई बार न्यूज आया था, या ही वाज फियरिंग दैट ही माइट बी अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. सो इन दैट केस द चार्ज विल बी गिवन टू हिज वाइफ कल्पना सोरेन एज द चीफ मिनिस्टर. ओके, फॉर दैट पीरियड है ना. Mr. Soren is not an MLA, attended a meeting of the lawmakers and all. That is what you should be knowing it. Okay, so ये बस पता होना चाहिए. So let's wait for the what will happen in the future. तो wait करते हैं, then we will get to know more about it. So if you are watching this class, नीचे जाने का link दिया है, one-on-one counseling session का link दिया हुआ है. Okay, click on this link and you will get this Google form and everyone should fill this Google form. ठीक है, accordingly. Now, first page में एक और article थी, Imran Khan sentenced to 10 years in prison ahead of Pakistan's poll. I hope you are aware. So he is the ex-prime minister of Pakistan. He was ousted a few years back in no confidence motion. I hope you are aware. So no confidence motion pass हो गया था and he was removed as the prime minister of Pakistan. And now he was actually in the position and recently कौन है पाकिस्तानी court convicted. मैंने बताया है convicted means proven guilty in a court of law. Convicted former Prime Minister Imran Khan of revealing official secrets on Tuesday and sentenced him to 10 years jail. ठीक है, देखो Imran Khan, an ex-foreign minister also, Qureshi, that's Mahmood Qureshi, foreign है ना, देखो आप देखो Imran Khan and ex-foreign minister Shah Mahmood Qureshi both were sentenced to 10-year jail for leaking state secret, government का secret को reveal करने के लिए, मतलब पब्लिक में रिवील करने के लिए
उन पर आरोप ये है कि उन्होंने जो सीक्रेट है वो बात पब्लिक कर दी, इस तरह समझ लो। खान इज ऑलरेडी सर्विंग ए 3 ईयर जेल इन सम अदर केस, तो एक और करप्शन का मामला उसमें ही इज ऑलरेडी सर्विंग 3 ईयर्स जेल, तो इसमें से प्लस 10 ईयर्स और लग जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। स्पेशल जज मतलब ट्रायल कोर्ट, लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज। ओके, so he passed an order against him, है ना। so he belongs to political party, का नाम याद रखिए कि he belongs to PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, and he has faced numerous troubles in recent years with the denial of election symbol, the cricket bat, to the rejection of nomination paper. So he was not given election symbol, not allowed to conduct fight elections and all, and recently I hope you are aware. So ये news आई थी कि the case was filed against Imran Khan and Qureshi on 15th August last year. पिछले साल केस हुआ था by Federal Investigation Agency, which accused them of violating secrecy laws while handling the cable sent by Pakistan Embassy in Washington in March 2022, है ना। तो देखो इस तरह का न्यूज आया था ना, इसको साइफर केस भी कहते हैं, हो सकता है ये न्यूज में आ जाए कि व्हाट इज साइफर केस। So cipher case is related with what? So it is related with Imran Khan and all, and a classified cable sent to Islamabad by Pakistan's ambassador in Washington 2022. अब देखो क्या होता है क्लासिफाइड केबल, क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट, है ना। सीक्रेट केबल मतलब एक तरह के इंफॉर्मेशन सेंड किया गया, सो लेट्स से, है ना, इन वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन से इन अमेरिका से जो पाकिस्तान के एम्बेसडर था, सो पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए, पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए, ambassador to USA. He was in America, so he sent some information, कुछ information भेजा होगा. There might have been some information, and this information, according to the allegation, was revealed in the public. मतलब लीक कर दिया या लीक कर दिया, whatever it is. तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, इन पर आरोप यह है कि उन्होंने सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अमेरिका से पाकिस्तान भेजा था उसको उन्होंने रिवील कर दिया, एंड दैट इज व्हाई ही वाज जेल्ड फॉर 10 years अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर में, है ना। सो दे हैव सेड, देयर लीगल टीम हैज सेड दैट दे विल चैलेंज इन अ हायर कोर्ट एंड होपफुली विल गेट दिस सेंटेंस सस्पेंडेड, ठीक है। तो देखो जैसे इंडिया में कैसे होता है, इफ समवन हैज बीन फाउंड गिल्टी इन सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट में, so the person can file an appeal in high court, then the person can file an appeal in the supreme court. ऐसे ही चलता है ना कि अगर लोअर कोर्ट में कोई बंदा केस हार गया तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में हार गया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. सो वेरी सिमिलर थिंग वर्क इवन इन द पाकिस्तान, whereas if a subordinate court has passed an order, the appeal can be filed in the high court and then subsequently in the supreme court. Yes, that is what you should be knowing it. ठीक है, तो इसी की बात हो रही है. Okay, so these are the things you should be knowing about it. Cipher case इसको याद रखिएगा, है ना, हो सकता है नाम से पूछ लिया जाए and all. Okay, yes, before moving on guys, go to download our app, go to CLAT section and here is talk to our counselor button, इस पर click कीजिएगा and you will get to know more about our courses. ठीक है, and 4th February को 11 AM in the morning we'll be having a scholarship test. If you qualify it, you will get up to 90% off on our courses. ठीक है, like this is a course we are providing, CLAT 2025 course, 380 plus hours of live session, 300 plus recorded videos. If you have any query, call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो. And this is a 2024 test series for you. ठीक है. Okay, let's move on to the next one. The dark message to Delhi from Kangla Fort. देखो इसमें you are not supposed to, he is talking about that Manipur incident and all. वो सारी चीज़ he is talking about. You are not supposed to go in that detail. But yes, some of the things, information जो आपको पता होना चाहिए, we'll talk about that. ठीक है. So first of all, please answer this question. Shumang Leela is a traditional form of theatre in X where the roles of women are played by men called Nupi Shabis. Which of the following state is being talked about? Mizoram state, Manipur, Nagaland, Uttar Pradesh. What is the right answer? बताइए. And those who are watching, please press the like button, everyone. Shumang Leela एक traditional form of theatre है. Roles of women are played by men called Nupi Shabis. ठीक है ना? So which state has been replaced with X? What is the right answer? The right answer is state of Manipur. So B is the right answer. ठीक है? And the art of gender bending and all. इसको पढ़िएगा थोड़ा सा. Actually the author is talking about the same. Author ने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है in this article. Yes, Ramesh, you are right. B is the right answer. Okay. Yes. ठीक है. So I hope you are aware. Recently we have seen some incidents of violence in the state of Manipur. The capital is Imphal. है ना?
तो इसी पर पूरा डिस्कशन है. The violence started from 3rd May onwards in the northeastern state of India between the Meiteis and Kukis, Guzo tribal communities and all. So these are the things you should be knowing about it. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, कुछ हिली एरियाज में लोग रहते हैं एंड देयर इज वैली एरियाज, बोथ है ना. ठीक है, सो वैली एरियाज में मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग आर एक्चुअली Meiteis एंड दे आर मोस्टली हिंदूज है ना. एंड ऑन हिली एरियाज में ज्यादातर जो है वो कुकी पीपल आर लिविंग, कुकी ट्राइब्स आर लिविंग एंड दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस. ठीक है, ठीक है, कुकी ट्राइब्स. So there's a conflict between the Kuki tribes and the Meitei tribes. So Kuki tribe is having the scheduled tribe status, but the Meitei tribe do not have. However, recently, last year, there was a judgment of Manipur High Court which directed the state to provide a scheduled tribe status to Meitei community. And after that, the violence has started. The conflict started between these two and all. That was the reason. In fact, the Supreme Court criticized the Manipur High Court, directing the state to consider the status. This factually wrong. So Supreme Court was not happy with the Manipur High Court order because the Supreme Court said it is the domain of the president to determine a community as scheduled tribe community. तो ये president का domain है किसी को scheduled tribe बताना या नहीं बताना under article 342, right? That you should be knowing about it. ठीक है? This you should be crystal clear. Okay. Now let's move on to the next one. Economic encomium. Encomium क्या मतलब होता है? A speech or a piece or writing that is praised, है ना, जिसकी तारीफ बहुत किया जाए. ठीक है, okay. So now what exactly it is, देखो आपको पहले समझना होगा. First please answer this question, then I will explain. Who among the following is the chief economic advisor to the government of India currently? V. Anant Nageshwaran, Arvind Subramaniam, Raghuram Rajan, Krishnamurthy Subramaniam. What is the right answer? इनमें से कौन CEA है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के? Anyone? Everyone please press the like button. Subscribe to our channel. What is the right answer? Who among the following is the CEA to the government of India, Chief Economic Advisor? बताइए. Okay, yes, the right answer is option A, V. Anant Nageshwaran. Yes, Ramesh, very good. है ना. देखो एक्चुअली क्या, पहले आपको ये समझना होगा, होता क्या है, एवरी ईयर ऑन 1 फरवरी बजट इज प्रेजेंटेड. ठीक है, ओके, फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर. बट इस साल इलेक्शन है 2024 में. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ द बजट दिस ईयर 1 फरवरी को देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ इंटरिम बजट, हम लोग कहते हैं इसको. इंटरिम बजट पेश किया जाएगा जो जनरली शॉर्टर होता है ना. Because if the government gets changed, then the new government will come up with its own budget. ठीक है, तो अगर नई सरकार आएगी तो वो अपना बजट लेकर के आएगी. That is the reason. Second thing, in general क्या होता है, बजट से एक दिन पहले, 1 day before, 1 or 2 day before, economic survey is presented. 1-2 दिन पहले, जो कि लास्ट फिस्कल ईयर के बारे में डिस्कशन होता है. But this time, since interim budget will be presented, 1 or 2 days before, एक तरह का मिनी इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया. नॉट एक्जैक्टली एन इकोनॉमिक सर्वे, आप मिनी इकोनॉमिक सर्वे कह लो या उसको आप कोई भी टर्म कह लो. जैसे अभी इसके जो बात है ये कहा गया इसको इंडियन इकोनॉमी रिव्यू. सो दिस वाज प्रेजेंटेड. यू कैन कॉल इट एज, मेनी पीपल आर कॉलिंग इट एज मिनी इकोनॉमिक सर्वे, है ना. व्हाई द इकोनॉमिक सर्वे विल नॉट बी प्रेजेंटेड अहेड ऑफ बजट 2024? इसलिए कि इस बार इलेक्शन होने जा रहा है. ठीक है, तो जो 31 जनवरी को हर साल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता था वो नहीं प्रेजेंट किया जाएगा. बट एक तरह से आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ अ मिनी इकोनॉमिक सर्वे और व्हाटएवर यू कैन से, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू ये लाया गया. ठीक है, and it is released by Department of Economic Affairs, Economic Division. ठीक है, this is the department under Finance Ministry which has released this in Indian Economy Review. ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, if you see it carefully, इसमें कुछ चीजें हैं जो, देखो ये इमेज बहुत कुछ बता रहा है कि प्रोडक्शन जो इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन को, इन्वेस्टमेंट सेविंग को, सेविंग प्रोडक्शन को, ऑल आर एक्चुअली लिंक्ड टू ईच अदर. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. सिमिलरली स्टेबिलिटी, ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तीनों आपस में लिंक्ड है. फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है गवर्नमेंट की, है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना. यू मस्ट हैव हर्ड इट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज रिफ्लेक्टिंग इन ऑल. ओके, यस, इसका आंसर ए है. रमेश एंड आस्था अवस्थी वर राइट. हाँ, ए इज द राइट आंसर. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. वही जो इसके रिपोर्ट की बात बता रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. करेंटली इंडियाज इकोनॉमी इज 3.7 ट्रिलियन. इन द नेक्स्ट 3 years इंडियन इकोनॉमी विल बिकम $5 trillion, है ना.
और 2030 तक हो सकता है $7 ट्रिलियन हो जाए। दीज आर द थिंग्स। देखो अभी हमारी जो इकॉनमी यहाँ पर है ना, $3.73 ट्रिलियन, $3.73 ट्रिलियन मतलब 10 to the power 9, सॉरी 10 to the power 12 ना हो तो बिलियन में होता है ना। So this is the economy and we are planning that we should become $5 trillion in the next 3 years। यहाँ लिखा है ना, मतलब अगले 3 साल में लगभग, so by the year 27 and all। और प्लान ये है कि by $7 ट्रिलियन की बात हो रही है by 2030। so these are some of our targets, but currently इतना है ना, $3.73 ट्रिलियन। this is the nominal GDP of India। ठीक है, इतना पता होना चाहिए बेसिक थिंग्स। these are the things, etiquette of transformative growth since 2014, these are the things being talked about। तो इसी से लिया वो ये जो है ना, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। सो फ्रॉम हियर आई हैव टेकन सम स्क्रीनशॉट्स एज वेल। देखो जैसे इसमें बात कही गई है ना, सो वी हैव मूव फ्रॉम क्लोज इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी इन 1991। आई होप यू आर अवेयर, एक्चुअली 1991 में इंडिया ब्रॉट एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, then Indian economy transition from dominance of public investment to the coexistence of public and private investment। ठीक है, so these are the things। तो उसमें बहुत सारी चीजें बात की गई। टेक्नोलॉजी began to become identified as a key growth driver and all। तो टेक्नोलॉजी जो है वो ड्राइवर, ग्रोथ ड्राइवर का काम करता है, यानी जितना अच्छा टेक्नोलॉजी रहेगा इन एनी फील्ड, दिस विल लीड टू जीडीपी ग्रोथ, है ना। जितनी अच्छा, द मोर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी द मोर द जीडीपी ग्रोथ, है ना। यही सब की बात कही गई है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। Okay. Now the next is a blurred mapping of internal female migration। देखो इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन पहले क्या होता है। देखो एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब होता है अगर इंडिया से पीपल आर गोइंग लेट्स से टू सम अदर कंट्री, जैसे मान लो कि कोई जो है थाईलैंड जा रहा है या कोई गल्फ जा रहा है, समवन इज गोइंग टू यूएसए, सो दैट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल माइग्रेशन, गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। कोई दुबई जा रहा है जॉब करने के लिए, है ना, सम पीपल आर गोइंग टू यूएस, यूके, फ्रांस, दैट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, if a worker from Bihar is going to let's say Mumbai for doing a job, if a worker from Uttar Pradesh is going to Tamil Nadu, एग्जाम्पल बता रहे हैं, और let's say if a worker from Odisha is going to Delhi, तो ये हो गया इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री। अपने कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन होना, दैट्स कॉल्ड एज, है ना, इंटरनल माइग्रेशन। तो इसी पर बात किया उन्होंने, द ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट दिस, है ना, a blurred mapping of internal female migration। so actually the author is talking specifically about female migration की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Nobel Prize in 2023 was given to whom? And these are your options: Claudia Goldin, Paul Milgrom, Michael Kermer, Abhijit Banerjee। What is the right answer? Nobel Prize in Economics 2023 किसको दिया गया? What is the right answer? Anyone? This is important, star market। Yes, Ramesh, very good। Claudia Goldin, है ना। और क्या किस लिए दिया गया? अगेन द सेम थिंग, शी हैज डन रिसर्च ऑन वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, है ना। सो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, आप इस तरह याद रख सकते हो, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, है ना, कि लेबर में यानी वर्किंग इसमें वुमेन का कितना परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग। यस, आलिया, कौसर, आस्था, वसी, ऑल राइट। ठीक है, सो इंटरनल माइग्रेशन इज अ क्रूशियल फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड सोशल ट्रांजैक्शन। तो ये अपना शी इज कोटिंग सम सर्वे एंड ऑल, है ना, which collects data on employment has estimated to be 27%। इंटरनल माइग्रेशन जो है 27% माइग्रेशन जो इंटरनल माइग्रेशन है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड ऑल। ठीक है, ऐसे बता क्या रहे हैं आपको समझना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उतना डिटेल नहीं जाना। PLFS data suggests that the leading reason for marriage migration among women is 81% is women। ठीक है, so that is what you should be knowing, followed by migration of families 10%, employment 2.4%। यानी एक वुमेन जो है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर रही है तो उसमें 81% केसेस में वो शादी की वजह से हो रहा है। Because let's say if a lady is from Bihar, she gets married in Maharashtra, so she will move to her in-laws place। So 81% केसेस में माइग्रेशन मैरिज की वजह से होता है। ठीक है, देन दे आर सेइंग कि फॉलोड बाय माइग्रेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर उनके पेरेंट्स वगैरह सब मूव कर रहे हैं तो 10% उसका स्कोप है ना। और अपने जॉब के लिए सिर्फ 2.42% होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल there's a girl from मध्य प्रदेश, she has moved to Bangalore to do the job, तो उसका बस 2.42% केसेस है कि जॉब के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। पर प्राइमरीली अगर आप देखोगे 81% इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ वुमेन गेटिंग मैरिड इन सम अदर स्टेट्स। ठीक है, तो दूसरे स्टेट में शादी हो रही तो वहां चली जा रही है वो इन लॉज के पास। दैट इज एक्चुअली द मेजर रीजन फॉर इंटरनल माइग्रेशन। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट।
और इसमें जाना, इतना डिटेल नहीं जाना है, इन्होंने बहुत सारे सर्वेस कोट किया, डेटा कोट किया, इतना डेटा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है ना, बिकॉज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू ना. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. फिर एक दो चीज आप बता रहे, 85% ऑफ वुमेन हैव लेस देन 10 years ऑफ एजुकेशन व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम. हाँ, एक और बात होती है कि वुमेन का अपना पेमेंट सैलरीज वगैरह कम होता है मेनी केसेस, एंड वन ऑफ द रीजन इज परहैप्स शी इज लेस एजुकेटेड एज कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट. कई बार ऐसा होता है और उसकी वजह से these are the things being talked about. लिखा ना 10 years of education which can, women have less than 10 years of education which can create problems. So these are the things being talked. Waiting for vendetta. Vendetta मतलब क्या होता है? बदला लेना, to take revenge. Okay. Now mechanism to scan cases of political motive cannot address issue of cover up. अब देखो क्या है कि there are many allegations that the opposition parties in many cases have put allegations on ED that ED is actually raiding only the opposition parties, it is driven by political agenda and all. So these are actually the opposition parties have put allegations. So these are the things being talked about. खैर आपको लीगल चीज पता होनी चाहिए that yes, enforcement directorate works under these laws, ठीक है, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act, Figurative Economic Offenders Act. अच्छा, एक होमवर्क है, प्लीज टेल मी आफ्टर द क्लास इज ओवर, नीचे कमेंट सेक्शन में, हु इज द हेड ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अभी हेड कौन है, कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ. ओके, यस, ना. सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. खैर, मोस्ट टीन्स यूज सोशल मीडिया बट लैक स्किल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. अब देखो एक और ये आर्टिकल है, अमंग इंडियन टीनेजर्स इन रूरल एरियाज हु कैन इवन रीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ओवर 30% can still browse the internet and close to 50% can find a video on YouTube. देखो अभी एसर की रिपोर्ट आई थी, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट. दिस इज रिलीज्ड बाय एन एनजीओ कॉल्ड एज एनजीओ प्रथम. एक एनजीओ है जो कि हर साल रिपोर्ट निकालता है एजुकेशन से रिलेटेड, व्हाट इज द हाउ मच एक्चुअली इज द इफेक्टिव आउटकम ऑफ द एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, है ना, कि कितने तालीम हो रही है या तालीम का इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इनका आउटकम कितना हो रहा है. सो दे हैव सेड कि बहुत सारे ऐसे इंडियन टीनेजर जो कि एक पैराग्राफ पढ़ नहीं सकते हैं ठीक से, लेकिन उनमें से 30% को इंटरनेट चलाने आता है और 50% लोगों को यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने आता है. ओके, आप समझ जाओ. सो दे आर हाईलाइटिंग दिस दैट द लॉट ऑफ यंग इंडियन टीनेजर्स हु कैन नॉट इवन रीड अ पैसेज, अगर उनको दे दी जाए द हिंदू का एक पैसेज पढ़े बताएं तो शायद नहीं पढ़ पाए, लेकिन उसमें से 30% ऐसे हैं जो कि इंटरनेट पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं जो उनको रिक्वायर्ड है. 50% तो ऐसे हैं जो यूट्यूब चला सकते हैं, अपना वीडियो सर्च कर सकते हैं. सो मोस्ट टीन यूज सोशल मीडिया बट लैक स्किल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. वो सोशल मीडिया चलाने आता है लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं, स्पेशली बिकॉज वी आर लिविंग एट अ टाइम ऑफ साइबर क्राइम, है ना. तो कई बार ऐसा होता है कि yes, those who actually do not have much knowledge, they can be easily trapped in cyber crime. अब उनको उतनी नॉलेज है नहीं कि मेरे पास कोई मैसेज आ रहा है तो फेक मैसेज है, फेक कॉल है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, है ना. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, है ना. Yes, Mr. Rahul Naveen is the head of enforcement directorate. Very good, Astha Avasthi. Mr. Rahul Naveen is an IRS officer, is the head of enforcement directorate. Yes. Pakistan and Iran calm after the storm. देखो एक्चुअली क्या हुआ था, ये भी एक दिस वाज एक्चुअली रिसेंटली इन द न्यूज. काम आफ्टर द स्टॉर्म, है ना, बीच में स्टॉर्म आए फिर काम हो गया. क्या मतलब हुआ? एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, दिस वाज कमिंग इन द न्यूज दैट जनवरी के फर्स्ट वीक में द ब्लास्ट हैपेंड इन ईरान. यहाँ पर समवेयर इज केरमान शाह इज अ प्लेस, हियर द ब्लास्ट हैपेंड. सो इसमें क्या हुआ था, ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 90 to 100 पीपल डाइड. 90 से 100 लोगों की डेथ हो गई. ओके, now it was actually the death anniversary of General Qasim Soleimani. He was a very famous army officer from Iran who was actually shot dead 3-4 years back. So that was his you can say death anniversary. On that day a blast happened where 90 to 100 people died. After that Iran started attacking Pakistan and many other places. तो ईरान ने क्या किया था, बॉम्बिंग किया था सीरिया में and I think इराक में भी, and then after some regions of Pakistan में, बलूचिस्तान रीजन में, in Balochistan region of Pakistan. Okay, उसके बाद क्या हुआ, जब ईरान अटैक पाकिस्तान became angry, it withdrew the ambassador वगैरह भी बुला दिया गया था. ओके, लिखा होगा देखो, है ना. ईरान अटैक्स alleged militant base in Pakistan, ये 18 जनवरी का है. उसके बाद क्या, पाकिस्तान condemns air strike, recalls the ambassador. ओके, तो ambassador भी बुला लिया था, लेकिन उसके बाद things became fine. It appeared that things became fine, they exchanged the ambassador. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि काम आफ्टर द स्टॉर्म. तो इसी पर ये आर्टिकल है, गो एंड रीड इट.
कि पहले बीच में स्टॉर्म आया इन द सेंस कि टसल हुआ, द ईरान बॉम्ब पाकिस्तान एंड ऑल, देयर हैव बीन सम इश्यूज, देन आफ्टर दैट द काम हैपेंड. तो क्यों काम हुआ? सम पीपल, आई मीन द टू कंट्रीज एक्चुअली पैसिफाइड द थिंग. तो इसको रीड करना आप, ठीक है. Go and read about that. 3 CRPF personnel died in Maoist attack in Bastar district. Okay, Bastar is actually a district in the state of Chhattisgarh. Okay. देखो मैंने आपको बताया भी है many times. I have discussed in the past also when we are discussing the editorials की मैंने बताया जो ये वाला रीजन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा एंड ओडिशा. दिस रीजन इज अफेक्टेड विद LWE. LWE को कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. सो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. LWE लिखते हैं, वही नक्सलिज्म कह सकते हो, नक्सलाइट्स. ओके, सो इसी रीजन में वो छत्तीसगढ़ का काफी बड़ा एरिया पड़ता है. इसी रीजन में साउथ, जैसे ये छत्तीसगढ़ है ना, दिस इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, CG लिखा ना है छत्तीसगढ़. अब इसके जो सदर्न पोर्शन है यहाँ पर, दिस इज अ वेरी फेमस फॉर नक्सलाइट्स एंड ऑल, बस्तर डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे बहुत बार पहले भी इंसिडेंट हो चुका है. So here actually 3 CRPF personnel killed in Maoist attack in Bastar. और यहीं पर CRPF के को तैनाती की गई है ना, CRPF Central Reserve Police Force. The job of CRPF is जैसे एक तो है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है ना, क्वाइन लिखते हैं काउंटर इंसर्जेंसी. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एंटी नक्सल ऑपरेशन, ANO के लिए. ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है. So 3 personnel of CRPF, 2 of them commandos of elite jungle warfare Cobra were killed and 15 injured in an encounter with Maoist. So actually उसमें से जो 3 CRPF कहते हैं उसमें कोबरा बटालियन के 2 थे. ठीक है. कोबरा जो ना CRPF ही का पार्ट है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, दिस है ना, कोबरा कमांडोज कहते हैं. These are nothing but they are a unit of CRPF. CRPF ही का पार्ट है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. लिखा है ना, कोबरा इज अ स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ CRPF ऑफ इंडिया ना. So that is what you should be knowing it. है ना. 6 Maoists were also killed in the retaliatory fire, the police said. तो 6 Maoists की भी कोई मार दिया गया. Okay, so that is what you should be knowing it. This. Now, एक और आर्टिकल थी. The article was India-US ties will make the democratic world stronger. So actually Rajnath Singh, the defense minister of India, he was giving a speech, ठीक है, in Indo-American Chamber of Commerce. Indo-American Chamber of Commerce ने दिल्ली में they organized a meeting, a sort of a function, conference strengthening Indo-US relationship. In that speech, in that defense minister gave the speech and he talked about it, है ना. And defense minister said that the capital and technological know-how of the US can help India to achieve the goal of becoming a developed country by 2047. So India का goal है कि by 2047, when we are celebrating 100 years of independence, 1947 plus 100 is 2047. This is our goal, that we should become a developed country. Okay, that is what. India's fast-growing economy, demographic dividend, skilled workforce, and huge domestic market guarantees high return for US companies and all. ठीक है. इंडिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो आप समझ गए. डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? यूथ पॉपुलेशन. जैसे कि यस कि वी आर हैविंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. स्किल्ड वर्कफोर्स है ना, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है ना, क्योंकि सिंस इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, 140 करोड़ पॉपुलेशन, तो उसमें बहुत बड़े मार्केट हो जाएगा अमेरिकन कंपनीज के लिए ना. सो दीज थिंग्स विल हेल्प इंप्रूव द इंडिया यूएस रिलेशनशिप एंड ऑल दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. He added that to deal with the challenges faced by the rules-based international order and maintain strategic autonomy, it will be necessary for American business to de-risk by investing in India. ठीक है. So these are the things being talked. And India US को natural partners बताया राजनाथ सिंह, है ना. India is the largest democracy. Largest democracy का मतलब क्या हुआ? कि first of all India is the largest, है ना, as far as population is concerned, and the largest democracy of course. ठीक है. And US is another big democracy, but India is considered as the largest democracy, है ना. When two democracies cooperate with each other, it will definitely make the democratic world order stronger, है ना. तो अगर दोनों cooperate करेंगे तो democratic world को stronger बना देंगे, है ना. So this is what it is talking about. Grazier he is talking about, ठीक है. Grazier confront Chinese soldiers in eastern Ladakh. Grazier क्या होता है? ग्रेज करना तो क्या होता है? चारा खिलाना, है ना. तो जैसे जानवर को जो चारा खिलाते थे जो लोग होते हैं, the person is called as grazier, the one who is actually handling the cattle, the owner of the cattle while the cattle is grazing, तो उसको grazier कहते हैं ना. तो जो है ना, तो grazier confronts Chinese soldier in eastern Ladakh. ये क्या हुआ? देखो,
ये लद्दाख है and we have discussed it so many times कि यहाँ पर you will find somewhere here LAC line of actual control, right? तो यहीं पे लाकचुंग एक एरिया है, यहाँ पर इंडियन ग्रेजियर, जो लोग इंडिया जो जानवर को चारा खिलाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेजियर, मैंने बताया है ना. वेयर स्टार्ट बाय चाइनीज सोल्जर्स इन कागजुंग एरिया ऑफ LAC, मैंने बताया ना. दिस एरिया इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. दिस रीजन इज अक्साई चीन. वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर पेड सेशन इन डिटेल. ओके, तो यहीं पर एक्चुअली क्या हुआ कि उनको मना कर दिया गया. इंडियन ग्रेजियर्स वर स्टॉप्ड बाय चाइनीज सोल्जर्स टू ग्रेज देयर एनिमल्स एंड ऑल. ओके, so that is why it was in the news. So Chinese military is called as PLA, People's Liberation Army. ये पता होना चाहिए, PLA. These things you should be knowing it. Now एक और आर्टिकल थी, इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्केट, ठीक है. तो इसमें से क्या है, 12 जो फोर्ट हैं मराठास के, एंड दीज आर सालहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, and so these are the places, 12 places in Maharashtra, and Gingi Fort in Tamil Nadu as well. ठीक है, so go and read about these things. ठीक है, इसको मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी कहते हैं, which includes these 12 components. It has 12 components. All these have been recommended for UNESCO World Heritage Site. अब इसको रिकमेंड किया गया, नॉमिनेट किया गया, अभी फाइनल तो यूनेस्को की कमेटी डिसाइड करेगी. यूनेस्को's committee will decide finally. But currently we are having how many UNESCO World Heritage Sites? 38, 40, 42, 44. And last year, I mean in 2023, 2 were added in UNESCO World Heritage Site. वो 2 का नाम बताना है. UNESCO World Heritage Site टोटल कितने हैं इंडिया में? 38 है, 40 है, 42 है, 44 है. और पिछले साल 2 नए ऐड किए गए थे. उन दोनों का नाम अगर आप बता दोगे, I'll be very happy. What is the right answer? Yes, Astha Vasti, very good. 42 है. So last year we had 40 plus 2 were added. What are those 2? Yeah. और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इन फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी की मीटिंग जो होती है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में होगी, दिल्ली में, एंड दैट विल बी फ्रॉम 31 to 31 जुलाई. ठीक है, सो ये भी पता होना चाहिए. सो हियर सी इज द राइट आंसर. यस, ऋषि कुमार झा, रमेश, आस्था वसी, यस यस, आलिया कौसर, वेरी गुड. जो 40 थे, 2 वेर एडेड. 1 इज होयसाला टेम्पल, गुड. दूसरा नाम बताइए. होयसाला टेम्पल इन कर्नाटका. Yes, Ramesh, Astha, Vasti. Yes, very good. Huh? Yes, Alia Gosar, very good. Karnataka. And the another one is Shanti Niketan from West Bengal. Okay. And Shanti Niketan जो है रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ से एसोसिएटेड है. It is associated with the life of रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, ठीक है. होयसाला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो वेसारा स्टाइल में डिजाइन होता है, इसे पता होना चाहिए. वेसारा स्टाइल टेम्पल्स दे आर कॉल्ड. ठीक है, so you should be knowing about that as well. Okay. Now if you're watching this class, नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So one-on-one counseling session का there's a link is provided. Click on this link. You will get this Google form. You should fill this Google form, and our team will approach you and tell you about the prospects of the exams and which exam you can attempt for 2024-2025. ठीक है. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel. Follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.